Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with our geometry chapter number 10, perimeter and area. So with the name itself, you might have understood what is perimeter and area because you have already read about these two words, isn't it? So let us again see the concept of perimeter and area in this chapter, and then we will go for the exercises. Now students, you have already learned about the basic shapes, that is your square, rectangle, triangle, circle, all these basic shapes you know. So we will today learn in this chapter how to find the perimeter and the area of these shapes. Now let us first go to the definition of perimeter. Now students, you have been given with the definition of perimeter in your textbook, that is page number 119. So here you can see perimeter is the total length of the boundary of a plane closed figure. The word perimeter is derived from the Greek word peri, that is your around, and meter meaning measurement. So in short, perimeter means the total or sum of all the sides of a given plane closed figure. Now you have been given with the definition of perimeter in this paragraph. So we will just see what this statement means. Now let us just see the meaning of perimeter with the help of our बेसिक शेप्स. सो आप देख पा रहे हो मैंने बेसिक शेप्स बना लिए हैं. तो ये है आपका स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये है सर्कल और ये है ट्रायंगल. ओके, नाउ व्हाट इज perimeter? So with the help of the figure we will see what is perimeter. Now perimeter is the total length of the boundary of a closed plane figure. Now if you can see the figures, they are closed. सभी फिगर्स क्या है, क्लोज्ड है कि किधर से भी वो ओपन नहीं है. अब आप देखिए यहाँ पर मैंने कैसे किया है, दिस two ends are not closed, so that this is a type of open figure. So now if I just join this becomes a closed figure. Okay, so all the figures are now your closed figure. So perimeter is the total length. Total length means अब आप यदि स्क्वायर को लेंगे तो आप देख सकते हो ये साइड, this side, this side and this side. These four sides are there, and if you want to have the total length of this boundary, so what you will do, you will just add all the sides and you will get the total length of this closed figure. तो सपोज ये है आपका एक फील्ड मतलब यहाँ पर समझो आपका खेती बाड़ी करने के लिए एक ज़मीन है, जो ज़मीन का शेप क्या है, स्क्वायर है. तो अब आप क्या करोगे, आपको फाइंड आउट करना है कि आपके इस ज़मीन को बाउंड्री लगाना है. तो ज़मीन को बाउंड्री क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये क्रॉप्स को आपको एनिमल से बचाने हैं, इसीलिए आपको इस फील्ड में बाउंड्री लगाना है. तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से बाउंड्री लगाओगे. ठीक है, तो आप इस तरह से एक फेंसिंग बना लोगे. तो ये फेंसिंग के लिए देखिए, इस फेंसिंग के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपको फेंस की ज़रूरत है. फेंस मीन्स आपको तारों की ज़रूरत है, आपको बाम्बू की ज़रूरत है, जिससे कि आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो जब आपको इस
क्लोज फिगर में फेंस लगाना होगा तो आपको क्या करना होगा, इन चारों साइड्स का जो भी लेंथ है उसे आपको ऐड करना होगा और वो जो आपको सम मिलता है उस सम के लेंथ में आपको ये जो वायर्स है फेंसिंग वायर्स वो खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हम फेंसिंग दे रहे हैं वो सिर्फ कहाँ पर दे रहे हैं, हमारे बाउंड्री पर। ठीक है, बाउंड्री आपको पता है बाउंड्री क्या चीज़ होती है, जो आपको एक प्रोटेक्शन करता है, एक फिगर, एक जो भी आपके लैंड हो या आपका पॉन्ड हो, कुछ भी हो, उसमें एक तरह का बाउंड्री होता है। वो क्या आपको शो करता है कि वो बाउंड्री तक ही आपका एरिया है। ठीक है, सो दैट बाउंड्री नीड्स टू बी फेंस्ड। ओके, सो नाउ व्हाट इज पेरीमीटर इज, पेरीमीटर इज ओनली दिस बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो बाउंड्री है इसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ओके, so the boundary is known as the perimeter. Now when you are putting the fence, आप जब ये fencing डालते हो तो आप बीच में नहीं डालोगे fencing, है ना, तो this the area which is inside you are not putting fence, isn't it? Only to the boundary you are putting fence, so that is called as the पेरीमीटर। तो आप अभी ये सर्कुलर जो आपका फिगर है इसमें भी कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका प्लेग्राउंड जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। दैट टाइम ऑल्सो यू नीड टू पुट आइदर फेंस और वॉल, फेंस डालते हैं नहीं तो कोई वॉल डालते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी बाउंड्री के साथ ही डालते हैं, नॉट इन बिटवीन। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री का लेंथ डिस्क्राइब करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर इज नथिंग बट it is the boundary. So here also you have the rectangular figure. Here also if you need to fence it out, you will fence the boundary. Here also in a triangular manner, if you want to put wall or boundary, so you have to calculate the पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मीनिंग होता है अराउंड, पेरी इज अराउंड, पेरी मीन्स अराउंड, अराउंड। तो आप देख सक रहे हैं फेंसिंग जो है वो हम अराउंड ही डाल रहे हैं और मीटर मीन्स मेजरमेंट। सो पेरीमीटर इज द मेजरमेंट अराउंड द फिगर। ओके, सो मेजरमेंट अराउंड द फिगर विच इज द perimeter. Now you will just see that inside this, inside the figure, the whatever area, whatever space is available, whatever space is available, ये बाउंड्री के अलावा जो बीच में आपके जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं एरिया। ओके, एरिया कौन सा होता है, एरिया जो आपके स्पेस इनसाइड द बाउंड्री है, दैट इज योर एरिया, दैट इज योर एरिया। तो यहाँ पर एरिया आपका ये चीज़ हो गया और दिस बाउंड्री इज योर पेरीमीटर। Okay, so in the area what you do, in the area you put the crops, you grow the crops, isn't it? In the area you play, isn't it? In the area you do all the activities, but around the boundary you either put fencing or wall. Okay, so perimeter is the boundary and area is the space inside the figure or inside the shape. Okay, so this is the concept of perimeter and area. Now you can see that I have drawn a closed square shaped figure and here I have put the boundary. So this square shape has sides maybe equal to 2 meter, this is 2 meter, this is 2 meter and this is 2 meter. तो इसका perimeter क्या हो जाएगा? Perimeter means length of all the sides. So what will be the perimeter? Perimeter will be 2 plus 2 plus 2 plus 2. So total 8 meter.
So your perimeter is 8 meter. That is the total length of the boundary. Okay, so this is your perimeter. This is how you can find out the perimeter. And for your area, area means you need to just find out the space in between the figure, so that you can just have the formula, that is side square. So 2 square, that will give you 4 square meters. So this will be your area. Okay, so this is how you have the formula for your perimeter and area of a square figure. ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हर एक साइड है, इसीलिए आपका कितना हो जाएगा, 4 साइड्स। सो 4 into 2 will give you 8. So this is the formula. So you have the formula for different figures, that is for different figures, perimeter and area. Okay, so this is how you have to find out the perimeter and area of the given figures. Now I have given you a close figure of that is a rectangular figure. So here you can see that we have to just add up all the sides. So 2 plus 3 plus 2 plus 3. So you know that in rectangle opposite sides are equal. Okay, so 2 plus 3 plus 2 plus 3. I have written the numbers or the length of each side. So this will give you the perimeter. So this will give you the perimeter as 10. 10, if it is centimeter, then put the unit as centimeter, and if the unit is meter, you should put the unit as meter. So this is how you can easily take out the perimeter. So let us move to exercise 10.1 with the concept of perimeter. So students, see exercise 10.1 where you have find the perimeter of the following figures with the help of the given measurement. So you have been given with the figures, you can see the figures. Okay, so here you can find out these figures are different one. Okay, so then also you are you will be able to find out the perimeter of these figures. Okay, so let us first see this figure. दिस इज एन रेक्टेंगल. कैसे पता चला ये रेक्टेंगल है, क्योंकि देखिए साइड्स देखिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देखिए है ना. सो दिस इज द रेक्टेंगल फिगर. दिस यू कैन सी दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस फिगर इज अ डिफरेंट फिगर रादर देन योर बेसिक शेप्स. ये बेसिक शेप से अलग टाइप का फिगर है. Here also you can see different shape. Okay, so let us first find out the perimeter of the first figure. So what you will do, you will only add up the measurement of all the sides. तो आपने क्या करना है, आपको जो हर एक साइड आपके ईच साइड के जो मेजरमेंट दिए गए हैं उन सभी मेजरमेंट को आपको ऐड करना है. ठीक है, सो चलिए हम इसे ऐड करते हैं. सो देखिए हमने फर्स्ट फिगर जो है वो बना लिया है. आई हैव नॉट पुट द मेजरमेंट्स. मैंने सबसे पहले मेजरमेंट नहीं डाला है, अब मैं डालूंगी मेजरमेंट. लेट अस फर्स्ट सी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अभी ये कौन सा रेक्टेंगल है, नेम क्या है इसका, इसका नेम है ABCD. तो देखिए ABCD इज द रेक्टेंगल. नाउ आई विल पुट द मेजरमेंट्स. नाउ सी, perimeter of rectangle is equal to sum of all sides of rectangle ABC. So let us see one by one. First side is AB, then plus BC plus CD, and then last is DA. Okay, so देखिए AB, BC, CD and DA. So now let us put the numbers whatever is there. AB का कितना measurement था, 4. BC का 3 था, then again 4 and again 3. Okay, now let us just add up. Now see, after adding we are getting
14 एंड सिंस द यूनिट इज सेंटीमीटर इसीलिए हमें यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखना है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 14 सेंटीमीटर. Okay, so it is very easy. So let us go to the next figure. Now see the next figure. Next figure is your triangle. So here triangle name is PQR. तो हमने वैसे ही लिख लिया है. Then sum of all sides of triangle PQR. So let us see PQ, QR and RP. So this way we are writing. Then as you know PQ is 4 centimeter, put 4. Then QR is 6 and RP is 5. So we have to just add up all these numbers. Then we are getting 15 centimeter as the perimeter of the triangle PQR. Now see the third figure. This is not your basic figure. So you have this figure. So you can say the perimeter of figure EFGHIJ. EFGHIJ. तो इस तरह से हमें हर एक साइड्स को लेना है और उसका हमको मेजरमेंट लिखना है और उसके बाद उसे ऐड करना है. तो लेट अस सी. तो देखिए इस तरह से हमें हर एक साइड्स को लिख लेना है और उसके साथ में जो मेजरमेंट लिखा है उन्हें हमें ऑब्जर्व करके उसे भी हमें लिखना है. तो देखिए आप फिगर देखिए इस तरह से EF इज़ 3 सेंटीमीटर, FG इज़ 2 सेंटीमीटर. इस तरह से हमें हर एक साइड्स को लेना है और उसके मेजरमेंट लिखना है. आपने जस्ट ऑब्जर्व कीजिए इसे. EF 3 सेंटीमीटर, FG 2 सेंटीमीटर, GH 2 सेंटीमीटर एंड HI 3 सेंटीमीटर, IJ 2 सेंटीमीटर. ओके, इस तरह से हमें एक एक करके हमें इसका मेजरमेंट लिखना है और अब इसे ऐड करना है. So the perimeter of figure EFGHIJ is 14 centimeter. Now let us move to next one. Now see the figure here, that is perimeter of figure MNOPQR. Okay, MNOPQR is the figure. So let us write all the measurements accordingly. So MN plus NO plus OP plus PQ plus QR plus RM. तो सब इसी तरह से हर साइड को हमें ऐड अप करना है और फिर उनके मेजरमेंट्स को ऐड कर उसका पेरीमीटर निकालना है. Now see, I have added up all the sides and the perimeter comes as 14 centimeter. So it is very easy to find out perimeter. Now let us move to question number 2. Find the perimeter of your pencil box, mathematics book, notebook and textbook एंड लंच बॉक्स विद द हेल्प ऑफ रूलर. तो आपने आपके पेंसिल बॉक्स को लेना है, मैथमेटिक्स नोटबुक, बुक एंड टेक्स्ट बुक एंड लंच बॉक्स सभी को लेना है एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर. आप एक स्केल ले लोगे. स्केल लेने के बाद आपको इन सभी थिंग्स के मेजरमेंट लेने हैं. तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ. तो आपने इस तरह से आपके मैथमेटिक्स जो टेक्स्ट बुक है उसे आप ले लीजिए और फिर रूलर को ले लीजिए. तो मेरे पास तो छोटा रूलर है, आप बड़ा जो आपके पास रूलर होगा उसे आप ले लीजिए और फिर इस तरह से मेजरमेंट कीजिए. देखिए यहाँ पर इट इज़ हियर इट कम्स एज 15. देन फर्दर आई नीड टू गो फॉर इट. सो देखिए ये 15 तक यहाँ पर आया था. फर्दर आई हैव टेकन, सो आई थिंक इट इज़ 16, 17, 18, 20, 21, 22.
So this side, that is the breadth is your 22 centimeter, and just go for length के लिए आपको फिर से इस तरह से मेजरमेंट करना होगा, है ना। तो जैसे ही आप मेजरमेंट ले लोगे तो यू नो दैट दिस टेक्स्ट बुक इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, सो दिस breadth and this breadth will be same, and this length will be same. Okay, so just measure this lengths and find out the perimeter of this textbook. Similarly, you have to take your lunch box, you have to take your pencil box and try to measure with your ruler and then try to find out the पेरीमीटर. तो आपने क्या करना है, रूलर से आपको इन सभी साइड्स को मेजर करना है और उसके बाद उसे ऐड अप करना है. ऐड करने के बाद आपको इन सभी थिंग्स के पेरीमीटर मिल जाएंगे. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क. Now third question, find the perimeter of a triangle whose sides are 6 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter. तो आपने एक ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है. तो आपको उन ट्रायंगल का आपको इस तरह से नेम कर दीजिए ABC, और इस तरह से उन्हें आपको मेजरमेंट लिखना है. और आपने ऑलरेडी ये फिगर जो था इसका हमने पेरीमीटर निकाला था, तो सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई. सो यू नीड टू जस्ट ऐड अप द नंबर्स, एंड व्हाट इज दैट नंबर, 6 + 3 + 5. सो व्हाट विल कम, so 6 + 3 + 5 will give you 14, isn't it? So 14 centimeter will be the perimeter of the triangle. Now you have fourth question. Look at the given pictures and answer the question. What is the perimeter of the frame of painting given alongside? So this figure, ये figure है आपका rectangular figure. So here you have been given with the length. तो ये length भी आपका 30 centimeter हो जाएगा. और ये यहाँ पे जो आपका width दिया हुआ है 18 centimeter, that is breadth. So this will also be 18 centimeter. So you can just add up these four numbers and you will get the perimeter of the frame. तो इन चारों numbers को आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको इस फ्रेम का perimeter easily मिल जाएगा. Okay, now here is your second question, where you have the playground near Raju's house is shown alongside. If Raju runs around the ground once, find the distance covered by him. So this is the playground. ये जो प्लेग्राउंड का फिगर आपको दिया गया है, एंड राजू विल रन अराउंड दिस प्लेग्राउंड. तो इस तरह से वो प्लेग्राउंड के चारों तरफ वो रन करेगा. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. सो हियर द पेरीमीटर विल कम एज 200 + 140 + 200 + 140. सो अलोंग द बाउंड्री ही विल रन, isn't it? So राजू जब रन करेगा वो बीच में से रन नहीं करेगा, वो along the boundary he will run. So that is why you have to just find out the perimeter of this playground. So it will be 200 + 140 + 200 + 140, and that will give you the distance covered by him. और यहाँ पर बोला गया है कि एक बार ही वो रन कर रहा है. ओके, सो दैट विल ओनली गिव यू द डिस्टेंस कवर. तो इन चारों फिगर्स को आप ऐड कर दीजिए और आपको इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय राजू यू विल गेट. Now you have the definition of area. I have already told you that area is a surface or the region enclosed within the closed boundary by a plane figure. So the space which is in between the boundary is known as the area. तो यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है इसका बाउंड्री आपको ब्लैक कलर से किया गया है, और जो एरिया है दैट इज़ ग्रीन कलर. हियर ऑल्सो द बाउंड्री इज विथ योर dark color and this area is yellow in color. तो boundary is already given to you, and that is called as perimeter, and area is the space in between. Okay, so this is the definition of area. It is the surface or region enclosed within a closed boundary. तो ये बाउंड्री है, इसके बीच में जो स्पेस है और द सरफेस है वो दैट इज कॉल्ड एज द एरिया.
Okay, so the shaded part in the figures represent the area. Shaded means this colored part is known as the area. Okay, so this is the concept of perimeter and area. Now here one example is given to you where you are going to find out the area of the figure given to you. So see, here the figure is a square, isn't it? So A, B, C, D is the figure and you have to find out the area of this square ABCD. So what they have done is, see, they have just divided this space or inside the enclosed space into 4 equal parts, 1 2 3 4. Okay, and then what they have done is each part is of 1 centimeter, isn't it? So each part is of 1 square unit. 1 square unit means 1 square centimeter. So what they have done, see, area of figure ABCD, area of square 1 plus area of square 2 plus area of square 3 plus area of square 4. So square 1 is 1 centimeter, 1 square unit. 1 square unit, that is the length as well as the breadth. Here also 1 square unit. So each square is of 1 square unit. So total area you are getting as 4 square units. Next topic is finding area by counting squares. So let us see how we can count it. Now let us see this example where to find out the area covered by the given figure. So by counting square, how you can find out the area. So you can see that the colored part is there. So you just have to find out the number of square covered by the figure PQRF. So you have to just count the number of colored figure, colored square. Okay, so यहाँ पे देखिए स्क्वायर, कलर्ड स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So you have 25 colored square. Okay, now area of one square, each square is 1 square unit. So area of 25 squares will be 25 multiplied by 1 and that will give you 25 square unit. Okay, why square? क्योंकि यहाँ पर this area of 1 square is there and then 25 square is there. Okay, so that is why you have 1 square unit. तो एरिया हमेशा हमें square units में लिखना पड़ता है. Okay, now let us move to next, that is area of irregular plane figures. Irregular means the shape of the figure is not fixed. Irregular figures do not have a fixed shape. तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर जो देखा था ये fixed shape दिख रहा है आपको. But some of the things are there that do not have fixed shape. So how you can find out the area of that type of figure? So let us see here. See this figure. This is like a figure of a leaf, isn't it? So this is not having a fixed figure. So you just have to put the thing and on the square paper, and then you have to draw the outline of that, and then you can find out the area of the irregular plane. Now how we can find out the area of irregular plane is you have to count the whole squares. होल मीन्स पूरा स्क्वायर को आपको काउंट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको हाफ स्क्वायर्स को काउंट करना है. तो आप देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपने को कितने सारे पूरे फिगर्स मिल रहे, पूरे स्क्वायर्स मिल रहे हैं. देखिए ये वाला, दिस इज होल स्क्वायर, फुल स्क्वायर है ये 1. देन दिस इज ऑल्सो फुल, दिस इज ऑल्सो फुल, दिस इज ऑल्सो फुल. Here the squares are not full. यहाँ से देखिए थोड़ा सा कट हो गया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कट हो गया है. So how many whole squares you are getting? 4. 1 2 3 4. Here also you have cut. Okay,
So 1 2 3 4 are the whole square. ये total full squares है. Okay, so 4 full square, whole square you got. Then number of half squares. So half square, now see here, this is half square A and B, but this is more than half. ये more than half है. देखिए थोड़ा सा इसमें कट है, इसमें भी थोड़ा सा कट है, but these two are half squares. Okay, so how many half squares are there? 2 half squares are there. Now you have number of squares that are covered more than half. So this is more than half, this is more than half. Okay, now these are not. Now number of squares that are covering less than half. So whatever is, ये देखिए ये less than half है, ये भी less than half है, ये भी less than half है, ये भी less than half है. So there are around 4 squares which are less than half. So what you need to do? You neglect this square. तो ये जो हाफ से भी कम स्पेस वाले जो स्क्वायर्स है उसे आपको इग्नोर कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, उसे आपको नहीं लेना है. ठीक है, तो सिर्फ आपने किसको लेना है? जो होल स्क्वायर्स है एंड जो मोर देन हाफ स्क्वायर्स है उसे ही आपको कंसिडर करना है. Okay, so that means it becomes approximate area of the given figure. That means you have 4 full squares, so 4 into 1 plus you have 2 half squares, so 2 into half plus you have 2 squares which are more than half, isn't it? So more than half is 2 squares, so 2 into 1. So you have total of 4 multiplied by 1 is 4, then 2 into half. तो इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा है इस तरह से कट हो जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 multiplied by 1 is 2. So you have in all 7 square unit. So the approximate area of the figure is 7 square unit. Okay, so this is how you have to find out the area of irregular figures. Now see exercise 10.1, where you have been given with the figures with the colored squares. So you need to find out the area of each figure by counting the squares. So find the area of each figure by counting the squares, where each square has an area of 1 square centimeter. So let us find out what is the area of this figure. तो यहाँ पर देखिए जो कलर्ड जो आपको यहाँ पर स्क्वायर्स मिल रहे हैं उसे आप काफ़ा सबसे पहले काउंट कर दीजिए. कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now here 8 9 ये ऑलरेडी काउंटेड है, 10 11, okay, 12, then 13 14. So in all 14 squares are there. Okay, here also counted 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So 21 squares are there. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So we have counted the squares in each figure. Okay, so here 14 we got, here 21, here 24. Now how we are going to write? तो मैं आपको ये सबसे पहले ये फर्स्ट का आपको राइट करके दिखाती हूँ, बाकी आपको मैंने यहाँ पर जो स्क्वायर्स है वो काउंट करके दिखा दिया है. आप अकॉर्डिंगली आप इन दोनों का एरिया निकाल सकोगे. ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट फिगर वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट वाज कवरिंग. सो यहाँ पर हमने 14 निकाल लिया था. तो एज पर योर स्टेटमेंट्स यू हैव गोइंग टू राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में है आपके फिगर में जो भी आपको लेंथ दिए गए हैं सब सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, तो इसीलिए आपने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना है. और फिर एरिया ऑफ 14 स्क्वायर्स विल बी 14 into 1,
So that will give you 14 centimeter square. So the area covered by the figure is 14 centimeter square or 14 square centimeter. Okay, so next B1 you can easily write. बी फिगर में आपको कितने स्क्वायर्स मिले हैं 21. सो अब हमने जैसे यहाँ पर 14 से कैलकुलेशन किया है, आपने सेकंड में 21 से कैलकुलेट करना है. तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है, आपको 21 लिखना है. यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आंसर विल बी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. और मैंने यहाँ पर आपको स्पेलिंग में भी लिख के दिया है सो दैट यू आर able to understand that centimeter square and square centimeter is the same thing. Okay, so this is how you are going to write for the second one and as well as the third one में भी हमने 24 squares निकाले थे, तो आप उसे भी यहाँ पर 24 लिख लीजिए. यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 24 centimeter square. Okay, so only A I have shown, B and C is very easy. You can just write and just see what is the area. Second question, find the area of irregular figures. Take area of one square to be one square unit. So here again क्या करना है आपको, जो होल स्क्वायर है फुल स्क्वायर वो आपको कैलकुलेट करने हैं. तो देखिए कितने फुल स्क्वायर है. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ गिवन इरेगुलर फिगर्स. Take area of one square to be one square unit. Now you have to count the full square. So let us see which one are the full squares. देखिए यहाँ पर ये full square है, ठीक है. 1 2 3. So let us just 3, then 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. This also you can take 14 15 16 17 18 19 20, then 21 22 23 24 25 26 27. तो आप देख सक रहे हो मैंने 27 फुल स्क्वायर को काउंट कर लिया है. अब मैं क्या करूँगी, जो हाफ स्क्वायर्स है दैट आई विल काउंट. नाउ सी हियर, दिस इज हाफ 1 2, देन यू हैव 3 4 5 6, okay, then here 7, here 8, here 9. Okay, so 9 half squares. Now more than half. So in all we have 9 plus 7, that is 36. Total 36 square we have got. Now more than half. ये देखिए यहाँ पर है 1, then 2, then 3 4 5. So here you are getting 5 square. Okay, so in all you are getting some 41 square, isn't it? 41, total 41. 27 plus 9 plus 5. So just calculate all these things. Now see, I have written the statements how you can write to get the area of irregular figure. So number of whole squares, तो हमने full squares जो काउंट किए थे वो कितने थे 27. Number of half squares 10. Number of squares that are covered more than half is 5. So हमने जब कैलकुलेट किया था इस तरह से हमने कैलकुलेट किया था. So as you can see, I have added up all the numbers of squares. So here you can see 27 multiplied by 1. हाफ स्क्वायर है इसीलिए हमने हाफ को मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ. तो हमें कितना मिलता है देखिए 5.
Okay, so in all we are getting 37 square unit. Okay, so in book you may find some different answer, तो थोड़ा बहुत आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इधर उधर हो सकता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन व्हाट वी हैव काउंटेड, हमने जो काउंट किया है उसके लिए हमें 37 स्क्वायर यूनिट्स एरिया वी हैव गॉट. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा वो थोड़ा सा कभी कभार डिफरेंस आ सकता है. ठीक है, तो आप बुक में शायद यहाँ पे 39 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है. सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट बिकॉज हियर यू कैन हैव सम वॉट डिफरेंट आंसर. तो आप जो आंसर लिखा हुआ उसमें भी बुक में जो आपके आंसर शीट है वहाँ भी आपके लिखे हैं कि आंसर में वैरी. ओके, सो हियर योर आंसर कैन वैरी. तो इस तरह से आपने होल जो स्क्वायर्स है फुल स्क्वायर्स को काउंट करना है, फिर हाफ स्क्वायर को काउंट करना है, फिर स्क्वायर्स विच आर मोर देन हाफ दैट यू आर गोइंग टू काउंट, एंड द स्क्वायर्स विच आर लेस देन हाफ, हाफ से भी छोटा स्क्वायर है उसे आपको नेग्लेक्ट करना है, उसे आपको नहीं लेना है. ठीक है, तो इस तरह से आपको इस जो क्वेश्चन है इसके सभी फिगर्स को के एरिया को आपको इस तरह से सॉल्व करना है. नाउ ये जो सेकेंड फिगर है इसमें भी आपने सबसे पहले होल जो पूरे स्क्वायर्स है उसको काउंट करोगे, फिर हाफ स्क्वायर्स को काउंट करोगे और फिर स्क्वायर्स विच आर मोर देन हाफ यू आर गोइंग टू काउंट इट, एंड यू आर गोइंग टू add the number of boxes, number of squares, and then you have to calculate the area. Okay, and here also similar thing you are going to do. मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है उसी पे उसको आप एज ए रेफरेंस आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो एरिया. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर. सो कोई भी इरेगुलर फिगर दिया होगा तो वही आपका एक ही मेथड है जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो ये डेफिनेट फिगर का तो आपको बता दिया है और ये इरेगुलर फिगर का भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो. जब भी आप इरेगुलर फिगर का एरिया फाइंड आउट करोगे हमेशा आपको अप्रॉक्सीमेट वर्ड का यूज़ करना है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स यू नीड टू मेंशन द वर्ड अप्रॉक्सीमेट. Okay, so with this we complete off with exercise 10.2 and also with the chapter perimeter and area.